Hello everyone. Today we are going to see the basic concepts of IoT. IoT means the Internet of Things. So let us try to understand what this IoT is. See, today we are using a lots of smart devices. जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, हमारा फोन तो ऑलरेडी स्मार्ट है ही, लैपटॉप है, जो भी हमारे आसपास स्मार्ट डिवाइसेस है, all these devices are nothing but the IoT based devices. So let us see these concepts in detail. IoT is a network of physical devices connected to the internet that collect and share data. For example, physical devices like the smartwatch we have. So this smartwatch is connected to the internet. The smartwatch is connected to our mobile phone. So it is collecting the data like it is counting the heartbeats. Maybe it is counting the pulse rate, the steps that we take in a particular day. All the data it is collecting. And if it is connected to some other device, so that data will be shared with that particular device. So the IoT based devices are physical devices, means actually something we have, and that data is being shared with some other devices with the help of internet. So simply we can say IoT means everyday objects. It can be any object which is connected to the internet, so they can send and receive some information. So why they are sending and receiving this information? Definitely to take some decision or to make our lives better. So now what are the examples of IoT? The very simplest example is our smartwatch. Just now I told you, smartwatch can be connected to some other devices, and also they can send and receive data so that we can take some decisions based on that particular data which is sent or received by the smartwatch. Then we all have smart TV. Smart TV can also be connected to the internet. Then there can be smart bulbs which can be based on the concept of motion sensors or the sound sensors. Whenever we clap, the bulb can turn on or turn off, or they can be voice controlled. So we can turn on or turn off the bulb by using the voice commands. Smart cars like Tesla, we all know. So these are the examples of Internet of Things based devices, IoT based devices. Basically, all the smart devices where very less human intervention is required, all those devices are called as IoT based devices. कि जो ज्यादा से ज्यादा काम खुद से करते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो कुछ डेटा सेंड रिसीव करते हैं जिससे यूजर की लाइफ थोड़ी सी इजी बन जाए. Now, birth of IoT means who gave this name? So in 1999, Kevin Ashton, this person, he gave the name Internet of Things. He coined the term Internet of Things. So that he is called as the father of the IoT. There are also various names for IoT such as M2M, that is machine to machine, Internet of Everything, or world size web. So these are the names by which the IoT is known. Now, let us see the real-time applications of IoT. Some applications I told you in the previous slide. Now you see there are applications in various fields. Whichever fields are important in today's world, all these fields are having the impact of IoT. All these fields are touched by IoT. Number one is healthcare. See, if you take the example of this watch, this can also be related to healthcare because it is continuously monitoring my pulse rate. It is continuously monitoring the activities I'm performing. And suppose for some time, if I sit idle, it will vibrate. It will tell me you stand up and do some exercise. So definitely in healthcare or remote patient monitoring. For example, a machine is installed in the hospital and remotely doctors can check what is happening with that patient. There can be concepts like smart beds also. So in healthcare applications, IoT is playing a big role. Then there are smart homes, like we have seen smart locks, smart lighting systems, smart television, smart fridge, washing machine, smart AC. All the devices are becoming smarter. So these are the applications of IoT in smart homes. Then we talk about smart cities. Smart cities means where everything is automated. There can be smart traffic lights,
there can be smart street lights, there can be smart garbage collection system, smart water purifiers. So all these systems can be implemented in urban infrastructure management so that we can have smart cities. Next very important one is in agriculture. So there can be sensor based systems like smart irrigation systems. There can be drones for farmers which are observing the fields, maybe which can be used for sprinkling some medicines on the crops. So in agriculture also these IoT based devices can be used for weather forecasting, also we can use in agriculture. Then in supply chain management, we can use GPS based system where the particular vehicle is, how much stock we have, where our vehicles have reached or our stock has reached. All these things can be monitored and managed by using IoT based devices. And just now wearables, any device that we can easily wear, and that device can be playing the role of IoT based system. So there are vast applications of IoT in our day to day life. तो ये उनमें से ही कुछ एग्जाम्पल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में इनका रोल अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी कि आईओटी किन किन चीजों से बना हुआ है. तो वी कैन सी इन द डायग्राम देयर आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, there are sensors, connectors and actuators, and a separate box given for internet, and all together these three things are making the technology of IoT. Now, let us see all these objects one by one. Number one is physical objects. That any physical device that we are using, they all come under the category of physical objects. कि जो भी device है हमारे पास IoT based device. So जैसे कि home appliances में हो गया, हमारे पास smart fridge है, smart TV है, smart oven, या फिर जैसे कि हमने ये smart watch पहन के रखा है. All these are the examples of physical objects. Smart vehicles, machines, smartphones and laptops, they're already smart devices. So we can call them the physical objects. Then we need the connectors. Means when we want to connect this device to any other device, we need to have some type of connectivity. So that connectivity can be given by Wi-Fi, Bluetooth or any other cloud computing technique. Then the third important component is sensor. Sensor is the actual input device for your IoT based system. So they detect what is happening around them. They detect the changes in the surrounding environment. कि कोई भी सेंसर है वो सेंस करेगा कि उसके आसपास अगर ये टेम्परेचर सेंसर है तो वो सेंस करता रहेगा कंटिन्यूअसली कि कितना टेम्परेचर है और इफ इट इज समथिंग डिफरेंट देन that action will be taken by the actuator. So sensors का काम इतना ही है कि वो अपने जो आसपास का सराउंडिंग है उसमें से डेटा वो सेंस करते रहे कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है. जैसे कि वी हैव अवर सेंसरी ऑर्गन्स कि हम आंखों से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है आसपास या स्मेल आ रही है किसी चीज की, बट वो कुछ कर नहीं सकते, जस्ट वो सेंस करते हैं कि आसपास क्या चल रहा है. Then there comes the role of actuator. Actuators are nothing but the output devices for our IoT based systems. So they can be the movers or they are going to take some mechanical action. Now the same example of our eyes or our own sensory organs we can consider here. कि जैसे हमारे पास सारे 5 sensory organs है. Eyes, nose, ears, tongue and skin. तो ये सब जो ऑर्गन्स है 5 सेंसरी ऑर्गन्स, ये सब सिर्फ सेंस कर सकते हैं. अगर मैंने देखा कि कुछ डेंजर आ रहा है, कोई सांप आ रहा है सामने से, तो मैंने आंखों से देख लिया उसको, बट मेरी आंखें कुछ काम नहीं कर सकती. मेरी आंखें सिर्फ देख सकती है, बंद हो सकती है, बस इतना ही कर सकती है. मेरी आंखें दूसरा कुछ मुझे बचाने का काम नहीं कर सकती. तो मुझे बचाने का काम कौन करेगा? मेरे लेग्स है जो यहाँ से भाग जाएंगे, या मैं किसी चीज पे चढ़ जाऊंगी, या फिर मैं चिल्लाऊंगी कि सांप आया है. तो ये सब जो एक्शंस हो रहे हैं मैकेनिकल एक्शंस, दे आर लाइक एक्चुएटर्स. your brain is telling our actuators to take some action, to perform some action based on the data which is given by the sensors. Means sensors क्या कर रहे हैं? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और actuators जो है वो काम करेंगे depending on the data which is being collected by the sensors. Or there is the internet then. So if this whole system is connected to the internet,
definitely it is going to work better. If it is a standalone system, so it may not work that much efficiently, but when it is connected to the internet, definitely it is going to work better, efficiently. So what is the work of internet now here? It sends the data to whichever servers are there, clouds are there, then it receives the commands which are coming from those servers, and we can control the device from anywhere. When it is IoT based device, suppose you have installed the CCTV cameras at home, then you can see the same footage from anywhere, because those CCTV cameras are connected to your phone also. So that is also the example of IoT based smart home system. So now let us once again try to understand the basic block diagram of IoT, where physical objects are there, then sensors, connectors and actuators are there, and this whole system is connected to the internet. Now let us try to understand one more example of the IoT based systems which has this particular sensor and actuator. This is the example of smart firefighting system. So in this diagram, we can see there is a sensor. Basically, it is a temperature sensor. What the temperature sensor is doing, it is sensing the temperature around it. So whatever temperature is around, it is continuously sensing that temperature. You can see in our phone also, we get the temperature time to time. What is the temperature? What is the temperature now? What is the temperature at night? So temperature sensors are continuously sensing the temperature around that particular sensor. Then whatever temperature it is sensing, it is getting sent to the control center. वो अपना जो भी input उसको मिल रहा है, that it is sending to the control center. So what control center is doing now, it processing the signals, एंड अगर उसको समझा कि कुछ टेम्परेचर ज्यादा ही है या कुछ तो प्रॉब्लम है, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बढ़ गया, इफ इट इज विद इन द रेंज, इट विल नॉट टेक एनी एक्शन, कि मुझे दिख रहा है सामने सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो व्हाई वुड आई रन और व्हाई वुड आई शाउट, नो, बट मुझे अगर दिख गया कि सांप आ रहा है तो डेफिनेटली आई विल रन. सेम थिंग हो रहा है यहाँ पे सेंसर्स के डेटा के साथ. सेंसर अगर नॉर्मल डेटा सेंस कर रहे हैं, जो टेम्परेचर है उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बट अगर सेंसर ने ये सेंस कर लिया कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो डेटा जब कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा, तो डेफिनेटली कंट्रोल सेंटर विल गिव अ कमांड टू द एक्चुएटर कि अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपको स्प्रिंकलर स्टार्ट करने हैं, मतलब वहां पे पानी डालना है क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो might be there is a chance of fire. So जो एक्चुएटर्स है वो अपने आप से फिर स्टार्ट हो जाएंगे. अपने आप से मतलब इट इज गेटिंग द कमांड फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड देन द sprinklers are starting. So now let us see it from this particular slide. Temperature sensor detects heat, then signal sent to the control center, and then control center commands the sprinkler, and then sprinkler activates and extinguishes the flames. Okay, so this is the simple example of IoT based फायर फाइटिंग सिस्टम, जहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर, वो टेम्परेचर को सेंस करके डेटा सेंड करेगा. अगर कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ गया है तो कंट्रोल सेंटर कमांड देगा एक्चुएटर को कि अभी स्प्रिंकलर स्टार्ट कर दो, और वो जो भी वहां पे प्रॉब्लम है, जो फायर हो रही है, आग हो रही है, उस पर पानी डाल के उसको बुझा दो. ओके, सो यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिस्टम अपने आप से ऑटोमेटिकली द सिस्टम इज वर्किंग. दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ आईओटी बेस्ड डिवाइसेस की यूजर को ज्यादा उसमें कुछ इंटरफेरेंस की जरूरत है ही नहीं. डिवाइसेस जो है वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग डिवाइसेस है, वो जो डेटा कलेक्ट करेंगे उससे वो खुद से ही अपना डिसीजन ले सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है. Now let us see the next concept, the key features of IoT. Now IoT की क्या क्या key features है? पहला तो है connectivity. मतलब if you have one IoT based device, you can connect it to other devices also. So they are reliable, secure, bi-directional. मतलब ये data send भी कर रहा है और receive भी कर रहा है. So there is communication between devices and cloud platforms. So जो भी हमारे storage devices है, servers है, उससे वो devices, IoT based devices connected रहते हैं. The second feature of IoT based devices is analyzing. मतलब जो भी डेटा, रियल टाइम डेटा उनको मिल रहा है, वो डेटा वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं. एनालिसिस क्यों? अगर एनालिसिस नहीं किया तो वो डेटा का मतलब ही कुछ नहीं बनता. बिकॉज ऑफ दिस एनालिसिस they can build the intelligent systems which can take the decisions.
देन देयर इज डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज अगर वो लोग खुद का डिसीजन ले रहे, दैट मीन्स दे आर इंटेलिजेंट सिस्टम्स. सो artificial intelligence is it is there. So IoT based devices are enhancing the life through this smart automation. So for example, in some countries there are coffee machines, so where the coffee stock is there, no, when it uh, gets very जो खत्म होने आया है जो कॉफी का स्टॉक, तो ऑटोमेटिकली दैट मशीन विल ऑर्डर द कॉफी बिन्स. तो देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन कि मैं कब देखूंगी खत्म हुआ है स्टॉक, कब ऑर्डर करूंगी, इसकी जरूरत नहीं. इफ इट इज गेटिंग ओवर, ऑटोमेटिकली द न्यू स्टॉक विल बी ऑर्डर्ड बाय द मशीन. तो ये अपने आप से खुद अपना डिसीजन, जो बेटर डिसीजन है, दैट डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द IoT बेस्ड सिस्टम्स. Sensing तो है ही, because continuously they are sensing the data which is there around them. So they sensors, they are there to detect environmental changes and report status for active networks. अगर ये वाला स्मार्ट वॉच हमारा पल्स रेट काउंट कर रहा है, और ये वाला स्मार्ट वॉच किसी ऐसे सर्वर से कनेक्टेड है जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है कि मेरा हार्ट बीट कितना है, पल्स रेट कितना है, और कंटिन्यूअसली कोई उसको देख रहा है, एक इंटेलिजेंट सिस्टम. अगर मेरा हार्ट रेट बहुत कम हो गया, मुझे खुद को भी नहीं पता है, मैं सो रही हूँ और ये वॉच मैंने पहन के रखी है, तो अगर ये वॉच मेरा डेटा किसी इंटेलिजेंट सिस्टम को दे रहा है, तो वो सिस्टम डिसीजन लेगी कि किसी डॉक्टर को इन्फॉर्म करे या फैमिली को इन्फॉर्म करे या एम्बुलेंस मेरे घर तक भेज दे, सो दैट आई विल गेट द मेडिकल सर्विस इफ एनी प्रॉब्लम इज हैपनिंग विथ माय हेल्थ. तो ये मेरा वॉच ये सब काम कर सकता है अगर ये IoT बेस्ड डिवाइस है, क्योंकि ये तो सब मेरा डेटा ले ही रहा है, बट उस डेटा का क्या मतलब है अगर उसको किसी ने प्रोसेस नहीं किया. तो अगर प्रोसेस करेंगे अच्छी तरह से, इंटेलिजेंट सिस्टम बनाएंगे, तो डेफिनेटली दिस कैन बी लाइफ सेवर. तो ऐसे हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो वेरेबल्स है, आप उनको पहन के रखो, सारा डेटा कलेक्ट होता रहेगा, और जो भी डिसीजंस जो चाहिए आपके हेल्थ के लिए अच्छे डिसीजंस, वो सिस्टम अपने आप से लेती रहेगी, आप बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. So these are the key features of IoT, Internet of Things. Now, कि जो भी सिस्टम है उसके एडवांटेजेस तो होते ही है, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. तो IoT के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, अभी तक हमने देखे हैं, सो मेनी एडवांटेजेस. M2M communication means machine to machine communication is there. We are having human communications, no? So likewise, there can be machine to machine, means two machines are communicating with one another. So that is machine to machine communication. Then automation is there, means we don't have to take the decision, we don't have to tell the watch ki check my heartbeat, check my pulse rate, count my steps. We are not going to tell anything, automatically the machine is going to uh, do its work. That is called as automation. Efficiency to hai hi, definitely it is saving our time and it is minimizing the human efforts. एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, अगर स्मार्ट यूज कर रहा है तो कुछ डिवाइसेस अपने आप पे एक ऐसी सिस्टम बनाएंगे जो पावर सेव करेगी, जिससे हमें कम से कम पावर यूटिलाइजेशन लगेगा. And then they can be used in many real-time applications like security, home automation. Just now we discussed the examples of smart cameras and these watches, firefighting systems. अगर ऐसी चीजें हमारे आसपास है, तो definitely we can have the better life because of IoT based devices. So ये सारे इसके advantages है, बहुत ज्यादा है, but उसके कुछ disadvantages भी है. Disadvantages ऐसे कि ये हमारा डेटा, बार बार जो भी हमारा डेटा बन रहा है वो सारा डेटा इसके पास रिकॉर्ड हो रहा है. तो देर आर चांसेस ऑफ डेटा लीकेज ऑल्सो, एंड देर आर चांसेस ऑफ हैकिंग ऑल्सो, कि कोई भी हमारा डेटा मिसयूज कर सकता है जो हमारे IoT डिवाइस से कलेक्ट हो रहा है. सो दैट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक इशू है इसके साथ. देन कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई नॉर्मल बंदा अगर इसको बनाने जाए तो शायद ना बना पाएगा, तो इसके लिए अच्छे मतलब जो एक्सपर्ट्स है, IoT एक्सपर्ट्स, वो इसको बनाएंगे. तो डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड डेवलप एंड मेंटेन वी कैन नॉट से डिफिकल्ट टू मेंटेन, कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी टू मेंटेन बिकॉज दे आर यूजर फ्रेंडली, बट डेफिनेटली डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए दे आर बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है बनाना उनको. तो सीखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हम लोग बना पाएंगे.
एक और चीज है, अगर सारी चीजें ऑटोमेशन में जा रही है, सारी चीजें अपने आप से हो रही है, तो हम क्या करेंगे? तो बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन इन एवरी फील्ड, तो अगर ड्राइवरलेस कार आ गई तो ड्राइवर क्या करेगा बेचारा? तो वो तो जॉबलेस हो गया। अगर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम आ रही है, ट्रैफिक का सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो जो लोग ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे? या स्मार्ट सिटीज बन रही है, सब कुछ अपने आप से हो रहा है, तो जो लोग वहां पे जॉब कर रहे हैं वो क्या करेंगे? सो इट इज स्टिल अ टॉपिक ऑफ डिबेट कि इसकी वजह से शायद जॉब लॉस हो सकता है. So these are some disadvantages of IoT, but definitely if we see the positive side, there are more advantages of IoT than disadvantage. Advantages बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारी लाइफ इससे थोड़ी बेटर बन रही है. Now the next topic है कि IoT किन लोगों की वजह से पॉसिबल हो रहा है, कि who are the people making IoT possible, कि किन लोगों की वजह से हम ये IoT को इतना ज्यादा यूज कर पा रहे हैं. पहला तो है यूजर्स, बिकॉज इफ वी डू नॉट यूज दिस पर्टिकुलर डिवाइस, इफ वी डू नॉट वेलकम द टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? कि पहले तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूजर्स, कि अगर यूजर्स उसको नहीं हैप्पीली वेलकम करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको यूजर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो टेक्नोलॉजी फेल हो गई. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं कि जो यूजर्स को पसंद नहीं आते, तो और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जाती है. So that is why users are playing the most important role when we talk about any technology, any product. Then definitely there are engineers who are designing, who are developing, who are making the softwares, even hardware, electronic parts, connection to the network. So the people who are managing this technical part, those are the engineers. Then there are hackers. Why hackers are necessary? Because the ethical hackers, they try to check whether the system is secure or not. They try to find out the flaws and vulnerabilities in the system. कहाँ कहाँ से इस सिस्टम पे अटैक किया जा सकता है, वो ये सब चीजें ढूंढेंगे तो ही हम उसको अच्छी तरह से फिर डेवलप कर पाएंगे. तो हैकर्स का भी रोल है. देन देयर आर आर्किटेक्ट्स हु आर हैविंग द विजन कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर में कैसे तरह की बिल्डिंग, स्मार्ट लिफ्ट्स, स्मार्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, स्मार्ट आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग, ये सब वो लोग प्लान करेंगे. उनका विजन बताएगा कि फ्यूचर में हमें क्या क्या डिवाइसेस लगने वाले हैं. देन देयर आर क्राफ्ट्स पीपल, they are making the beautiful machines, beautiful crafts, so that can be changed afterwards into IoT based projects. Designers तो है ही, just now we discussed in engineers also. डिजाइनर्स जो है वो डिजाइन बनाएंगे, मे बी वो पॉसिबल होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन दैट इमेजिनेशन विच दे आर हैविंग, फ्रॉम दोज डिजाइंस वी कैन क्रिएट द फ्यूचर. जैसे कि पहले कुछ स्टोरीज में हमने सुना था कि एक ऐसी पेंसिल है जिससे लिखोगे तो वो जो बनाया है तुमने, जो ड्राइंग करोगे अगर, तो जो भी ड्राइंग बनाया वो रियलिटी में आ जाएगी. तो जैसे कि थ्री डी प्रिंटर्स का एग्जाम्पल हो गया कि हम बस डिजाइन बनाएंगे, उसको दे देंगे और जो चीज चाहिए हमें वो बना के देगा. तो एक विजनरी चाहिए होता है कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, या जस्ट इमेजिनेशन में किसी ने इमेजिन किया पहले तो आज ये पॉसिबल हो रहा है. सो डिजाइनर्स आर देयर एंड आर्टिस्ट, so they work in the forefront, so they are also helping the new inventions in the technology. So all these people like users, engineers, hackers, architects, craftspeople, designers, artists, all is there are so many people all together, they are working for making IoT based devices. So there is not a single person कि मैंने सोचा और मैंने बना लिया, तो मुझे अकेली को शायद ये चीज पॉसिबल ना हो, बट मुझे अगर किसी की हेल्प मिलती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा है, कोई हार्डवेयर में अच्छा है, कोई सॉफ्टवेयर में अच्छा है, और मेरे दिमाग में बस एक आइडिया आ रहा है, तो वो आइडिया मैं इन लोगों को बता के फिर वी कैन मेक अवर ओन IoT based device. So all together we need so many people to make this IoT based projects possible. Now we are coming to the end of this particular lecture. So today, what things we learn? So first of all, we learned about what is IoT.
So simply you have to say that network of physical devices connected to the internet that collect, share and analyze data. This analyze word is very important because only collecting the data may not be that much useful. So उसका analysis भी जरूरी है. तो physical devices है जो connected है internet से और data collect करते हैं, share करते हैं और उसको analyze करते हैं and also they take some decisions. So that is IoT. Then we have studied the core components of IoT. जो जो main चीजें हैं IoT की जैसे कि sensors है, connectivity important है, data processing important है और user interface जो हम लोग use करते हैं actually that is important. Then applications of IoT we have seen like smart homes, healthcare, agriculture, industry, smart. There are n number of applications that are having IoT based projects in use. बेनिफिट्स भी देखे हमने उनके एडवांटेजेस जैसे कि ऑटोमेटेड सिस्टम्स है एफिशिएंट है रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब अभी क्या चल रहा है द कंटिन्यूअसली दे आर मॉनिटरिंग द सिस्टम्स एंड डेफिनेटली दे आर हेल्पफुल इन better decision making because they are having the artificial intelligence in them, so definitely the decisions that can be made by taking the help of these devices is really helpful to us. And there are some challenges also, like we studied the disadvantages. Security can be the problem because we are sharing a lot of data over the internet. Privacy issues can be there. Data management can be a problem because so much of the data is being created, shared, and analyzed every minute we can say. So data management can be problem. Interoperability of the devices can be the problem sometimes because if the devices are not compatible, then there can be the problem in connectivity. Okay, so I hope you understood all these concepts. If you have any doubt related to the basics of IoT, you can definitely share your doubts in the comments. I will be answering each and every doubt shared by you people. Thank you so much for watching this video. Please comment, like, and share this video with your friends who may be in need of this video. And definitely don't forget to subscribe my channel. Thank you and bye bye. Take care.